Welcome back to the channel, guys. And as you guys probably understood from the title of the video, and it's a big news for me, and I hope that it's a big news for you all as well. I teased about this on my Instagram posts and WhatsApp stories and all that stuff. So finally, after a wait of a couple of years and saving bit by bit, after a lot of research, like YouTube में और कुछ वीडियो बाकी नहीं था इसके बाद, I finally bought my first car, and this comes very as a shocker, actually, you can say, for all those who know me as a hardcore biker and bike lover. Because मेरे को इससे पहले जब भी कोई पूछता था कि यार 3 लाख रुपए देके बाइक क्यों खरीदा है, गाड़ी क्यों नहीं, so I always used to say that I will never buy a car. I am a born biker. I will die a biker. But वही होता है ना, जो आप सोचते हो उसके ऑपोजिट ही कुछ होता है most of the times. It's not that I'm not happy with this decision, because this was at the end of the day somewhere my requirement. क्यों requirement है वो भी बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली. Why I bought a car in the first place? Because it's nothing to do with my age or anything like that. I'm fit enough to ride a bike and do long hauls on my bike. Not an issue there. But the thing is that जब मैं निकलता हूँ कोई ट्रिप पे तो मॉम डैड अकेले होते हैं घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड कहीं ना कहीं ये मेरे को अंदर में ये फील हो रहा था कि यार मैं ही हमेशा जा रहा हूँ ट्रिप पे, वो लोग नहीं जा पा रहा है. इट्स ट्रू दैट दे enjoy the trip through my lens, through my vlogs. I make sure that I show them all my episodes of any trip and all that. But कहीं ना कहीं ये लगता था वो अगर आ पाते तो और भी अच्छा होता. Summing up all these points together is when I thought of getting a car for myself. I did a lot of research and which car to buy and all that. शुरू से ही मेरे को कहीं ना कहीं ये मन था कि मैं टाटा की गाड़ी लूँगा, देश का लोहा. Anyways, देश का लोहा and desi sentiment aside, the biggest reason for me to go in for a Tata vehicle is the global NCAP rating, which is in my vehicle that I got. It's a 4-star global rating, and this car needs no introduction. It's a time-tested vehicle, and it's one of the most best-selling vehicles of Tata Motors India. And I did a lot of research. I contacted a lot of owners of this particular car, and then I took their opinions and all, goods and bads. So I test drove both the Tata Tiago, and also my second option which I had in my mind was the Tata Punch. And honestly speaking, मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं किया है, because I wanted to go in for Tata. वो मेरा decision already बना हुआ था मेरा, and it had to be either Tiago or the Punch. Altros भी पसंद था मेरे को, but then again Altros was slightly going over my budget. So this video will have footage from different day, like from my day of my test driving the Tiago and the Punch, and from the delivery experience, the Puja, and then a bits of my driving around the city. Primarily अभी ऑफिस ही ले जाता हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन बाइक एक दिन गाड़ी, एक दिन बाइक एक दिन गाड़ी, ऐसे करके ट्रीट कर रहा हूँ. बिकॉज फ्यूल एक्सपेंस, ऐसा नहीं है कि मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया है, बाइक ट्रिप करना छोड़ दिया, नहीं, इसका प्रूफ भी आ जाएगा. तो बाइक ट्रिप करने के लिए ना मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग लोकेशन की कमी हो रही है मेरे पास, क्योंकि यूट्यूब खोलो तो हर कोई जम्मू कश्मीर, लद्दाख, स्पीति, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, शिलोंग, मतलब और जैसे कोई जगह नहीं है दुनिया में. हर किसी को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना है, बट आई हेट बी डूइंग दैट. So if you have some genuine location in mind which are like really not explored or less explored, let me know in the comments. I will try, because अभी riding season आ रहा है, सर्दियाँ, my favorite. Winters are like round the corner तो नहीं कह सकता, देखो कितना पसीना हो रहा है अभी सितंबर चल रहा है. So I will try and incorporate those particular destinations as a solo trip, because riding partner as such मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कोई है नहीं. तो चलिए दिखाता हूँ आपको सारे वो फुटेज. एंड गुड ओल्ड यूट्यूब का नारा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, कुछ नहीं आता है, फ्री है. और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और शेयर करो अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में अगर पसंद आए वीडियो तो चलो शुरू करते हैं वीडियो.
एक बार बोल दिया था, अरे यार धीरे कर, प्यार से कर। मोटा हो गया मैं। So finally, a biker becomes a cager. Well, the biker will still remain alive. Don't worry, I'm not quitting motorcycling or anything like that. But अब से गाड़ी vlogs भी आपको देखने को मिलेंगे.